Welcome in the next lecture of Unit 2, which is Management. Today we'll go through what is BCG Matrix, what is SWOT Analysis, and decision making. So these three topics we are going to study under Unit 2, which is Management. And let us start with BCG Matrix. What is basically BCG Matrix? BCG Matrix has prepared. This is created by rather Boston Consulting Group. This is BCG. This is full form is Boston Consulting Group. This this group has created this matrix. This is basically used to growth share. This is basically growth share matrix, and this gives us a clear picture for analyzing the products as per the growth and relative market share. Now, what is relative market share? Say, suppose if our company produces the pens, and if our company ABC we have a company called ABC. Now, our product is how product sales, how our product sales is performing. That also we know because we have taken some target. But what is the market share and how much we are acceptable in the market, that we have to see, and that can be easily shown by this matrix. So this matrix is modern tool actually, which helps every company to look into the growth and the relative market share of its own. Okay. Now it has actually, as diagram shows, it has two axis or two dimensions. The first one gives the product general growth level as per the market, and the second will give you the measure of product market share, which is relative to the largest competitor available in the market. That is the relative market share or market growth. So if 100%, if we say 100% is the market growth, and where we lie, we have to see, say, ABC company group which is producing pen, तो pen market का जो 100% शेयर है, उसमें से हमारी पोजीशन क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, that we have to look, and that we have to see. So this BCG matrix gives us that clear picture where we stand actually in the market, and how is our growth level. So these both factors we can analyze using BCG matrix. Now analyzing these products, it gives very useful insight of, and also shows you the opportunity which is likely to be created in the market for a particular product. Like this is it has four distinct group, as we can see on the slide. It is a star, cash cow, problem child, and dog. Now we have four this thing. Star, cash cow, not problem child, it is question mark, and dog. So this way, these are the four distinct things. Now let us look to each and everything what it says, and collectively after analyzing all four quadrants, how we can conclude our product, where it lies actually, and how much market share, growth share it says. स्टार प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उन स्टार प्रोडक्ट्स माना जैसे स्टार हम समझते हैं, है ना. स्टार क्या है, तो स्टार इन चारों में सबसे टॉप पर है. ठीक. दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर हैविंग हाई शेयर, हाई ग्रोथ. इसके शेयर भी बहुत हाई है, इसकी ग्रोथ भी हाई होती है. ठीक है. सो इस तरह के प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं. इसका मतलब क्या है, दिस मींस दिस प्रोडक्ट कैन बी seen as market leading products, and these products will need a lot of investments to retain their position. मतलब ये इसका मार्केट शेयर भी ज्यादा होगा, इसका ग्रोथ भी ज्यादा होगा, और उसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होती है. टू रिटेन द पोजीशन इट हैज टू इन्वेस्ट मोर in terms of marketing, in terms of branding, in terms of everything, because one has to keep their cap up in the market. Now to support that growth and also to maintain the lead, one needs to invest more.
so as to manage the gap in the market. Now this has been said that star products will also be generating a lot of income due to strength they have in the market. Yes, if we are at the top in the market, then definitely we are generating high income, and that's of course because of huge investments in the marketing, branding, as well advertisement and all. So this much is required. Now the main problem with the product portfolio managers is to judge whether this market is going to continue in the same growth, with the same growth or not, or will it come down. So if this is the case, then star products has to will become then cash cows. Now what are cash cows? Cash cows are, it has high share but its growth is very low, its growth is comparatively low to star. Now what are cash cows? Cash cows don't need the same level of support as before. I mean, we can have a less branding work वगैरह वो भी रहता है, वो सब कम कर सकते हैं अपन. This is due to less competitive pressures because the market doesn't carry too much competitors, or doesn't carry too active competitors available in the market, and they usually enjoy the dominant position. It's like you can understand it like as Amul. व्हाट इज दी अमूल. अमूल मार्केट शेयर में भी सबसे ऊपर है, उसकी ग्रोथ, उसके कॉम्पिटिटर उतने नहीं है. अमूल सिर्फ नाम ही काफी है. अक्रॉस इंडिया इफ यू वांट टू गो फॉर बटर माने अमूल, चीज माने अमूल, आइसक्रीम तो अमूल की होनी चाहिए, बिकॉज अदर्स में सेल यू डेजर्ट्स इन द नेम ऑफ आइसक्रीम्स, बट अमूल गिव्स यू प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स. आजकल तो मिल्क भी होना तो अमूल का होना, बिकॉज अमूल मिल्क गाढ़ा मिल्क है और कंपैरेटिवली जेन्युइननेस है, और ऑन टॉप ऑफ इट it has big product range available as well. Now its reach is quite high, so it is dominant in the market and does not require much advertisements. दूसरे प्रोडक्ट में फिर भी आपको एडवर्टीजमेंट की हो सकता है जरूरत पड़े, लेकिन अमूल में कोई जरूरत की बात नहीं है, वो सेट ब्रांड मार्केट है. देन so these kind of products can be milked to fund star products also. So this can become the star product also. And now what are dogs? Dogs are basically low share and low growth market. Now if a company is having say less than 5% share in the market, can be termed as dog products. Now these dog products are classified as the product which has weak market share, and also along with this it is a low growth market. Low growth market mane you cannot see the opportunity available in the market. These are the product very likely to make a loss sometimes, or very low profit margin we are working with. These products you can say it's a wastage of time and resources, but the question for managers is to whether investment जो current investment है वो हमको करते रहनी चाहिए कि नहीं, या वो कभी profitable generate हो सकता है कि नहीं. तो ये इस तरह की market category है जो almost बिल्कुल ब्रेक इवन ही दिलाता है. ब्रेक इवन बोले तो ब्रेक इवन अपन आगे डिटेल में भी बढ़ेंगे. ब्रेक इवन माना जितना हमने लगाया उतना निकाला. तो किसी किसी लॉट में या किसी किसी सीजन में हमको जैसे बहुत अच्छा मिल गया है ना, और मतलब प्रॉफिट 10% प्रॉफिट मिल गया, और किसी किसी मार्केट में हमारा 20% लॉस चला गया. सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर डॉग प्रोडक्ट्स. ठीक है. देन कम्स दी क्वेश्चन मार्क, यहाँ प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं इसको. ये लो शेयर हाई ग्रोथ प्रोडक्ट्स होते हैं. Now what are these question marks? These products prove to be tricky. Now how it is tricky product, इसमें ये this product comes under high growth market. High growth market में it does not seem to have high share in the market. High share नहीं होगा लेकिन growth जरूर होगी. हमारा शेयर मार्केट में कम है, से 5% 7% जैसा शेयर है, लेकिन उसमें ग्रोथ काफी है, माने अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हाई शेयर को अवेलेबल करने की. सो दिस कॉज हाई ग्रोथ. आई एम टेलिंग हाई ग्रोथ ये है. लो ग्रोथ माने कोई पोटेंशियल बहुत ज्यादा दिख नहीं रहा उसमें. तो वो प्रोडक्ट वाइज डिपेंड करता है. तो प्रोडक्ट वाइज सबका अलग होता है, ये कंपनी वाइज नहीं निकाला जाता. ये प्रोडक्ट
कि सीरीज वाइज एनालिसिस होता है. नाउ द रीजन फॉर दिस कुड बी वेरी, if we have very new product in the market, this is if this is not the product, now some other problems can be there. Now what is the organization doing wrong? Sometimes if we are not new and if we are unable to gain the growth or the share in the market, then we have to check whether uh, if we are doing anything wrong, or our competitors are doing it little right than us. So what is the basic thing behind it, that this can be this type of products can be directly reached to the star segment, because since these products lies in low share, so this means shares can be increased, our market share, product market share can be increased, and it is always with high growth. हाई ग्रोथ माना कॉम्पिटिटर हमारा उतना अच्छा नहीं है, बट इफ वी आर परफॉर्मिंग वेरी लो, देन वी नीड टू check where we are lying behind the performance of our product. Now this complete matrix gives you it gives you the strength to assess the market and the product portfolio. Now four assumptions we have taken as a BCG matrix, studying the BCG matrix. If we want to gain market share, we need to invest in the competitive package, especially through investment in marketing. Now अगर हाई मार्केट शेयर चाहिए, जैसे एनी प्रोडक्ट विच इज गोइंग गुड बट रिड्यूस मार्केट, जो गेन है वो बहुत कम है, मार्केट परसेंटेज बढ़ाना है, मार्केट में प्रेजेंस ज्यादा होनी चाहिए, तो हमको इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा. तो इसका मतलब ये है, ये वो वाली चीज है जहां कैश काउ है, लेकिन अगर उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट में दम है, मार्केट शेयर अवेलेबल है. कैश काउ क्या होता है, उसमें मार्केट शेयर कम होता है बट वो परफॉर्मेंस इज वेरी गुड. सो वो बैठे बिठाए, कैश काउ माने बिठा के खिलाने वाला बिजनेस है ना. बिठा के एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया, 3-4 साल में इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ गया, देन वो बिठा के खिलाता है. लेकिन आप अगर अगर उसमें मार्केट शेयर बढ़ाने के चांस है, मार्केट में ग्रोथ है, तो यू कैन एक्सपैंड आल्सो. सो दैट एक्सपैंडेड बिजनेस विल कम इन स्टार स्टार प्रोडक्ट में आ जाता है, जिसमें हाई ग्रोथ और हाई मार्केट शेयर दोनों है. ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है और मार्केट शेयर भी आपका बहुत अच्छा है, और आप और ग्रोथ कर सकते हो. कैश काउ में मार्केट शेयर उतना नहीं होता, लेकिन आप बैठ के खा सकते हो. जैसे कोचिंग है, मैंने एक कोचिंग खोल ली मान लो, है ना, 2-3 साल में मेरे पास अच्छी भीड़ हो गई, अच्छे टीचर्स मैंने रख लिए. नाउ अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उन टीचर्स को मैनेज करना है, हैंडल करना है. नाउ मेरा बिजनेस अगले 3-4 साल तक मुझे बिठा के खिला सकता है. बट एक चेक मुझे रखना पड़ेगा इस बीसीजी मैट्रिक्स से कि स्टिल आई एम इन कैश काउ और नॉट. It can be I can be the star of the business, but it also parallelly can be I could be the dogs और क्वेश्चन मार्क वाले उसमें ना आ जाऊं. तो डॉग्स से तो मेरा मार्केट शेयर कम हो जाएगा, ग्रोथ भी कम हो जाएगी, और अगर क्वेश्चन मार्क है तो मार्केट शेयर भी कम हो जाएगा, लेकिन ग्रोथ हाई बनी रहेगी क्योंकि कॉम्पिटिटर उस एरिया में नहीं है. तो इस बिजनेस को हमको हमेशा बीसीजी मैट्रिक्स लगा के चेक करते रहना पड़ेगा. वी कैन नॉट स्लीप विथ लाइक हमारा बिजनेस तो कैश काउ और हमेशा कैश काउ बना रहेगा. एक समय था जब बिजनेस का मार्केट स्टैग्नेट होता था, तो 10-10 20-20 साल स्टैग्नेट होता था. अब ऐसा नहीं है. एक समय साबुन होना है तो लक्स ही होना है, डेटॉल ये एंटीसेप्टिक लिक्विड होना है तो डेटॉल ही होना है. ऐसा नहीं है, वो पहले होता था. वो जो मैट है, पहले हमारे यहाँ मैट चलती थी मच्छर भगाने के लिए, तो मैट है तो वो जेट की ही आएगी, ऐसा नहीं है. नाउ वी हैव वेरियस कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल इन द मार्केट, और पहले से पॉपुलेशन भी बढ़ी है, तो मार्केट शेयर भी लोगों के बटे हैं, अलग हुए हैं. सो एवरी 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 3 to 5 years डेफिनेटली ये जो शेयर जो बिजनेस 4 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, इनमें से हम स्विच करेंगे. वी नीड टू स्टडी दैट एंड वी नीड टू लोकेट आवर बिजनेस. नाउ इफ द मार्केट शेयर, one has to gain the market share or the potential to generate the extra cash due to the economics of scale. Sometimes it happens. And another thing is some product is at maturity stage. एक प्रोडक्ट में क्या होता है, एक इनिशियल पीरियड होता है जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, फिर उसका एक लीन पीरियड होता है जब वो खूब भयंकर तरीके से बिकता है. देन जब वो प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट से उठने लगता है,
तो उसको कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज, जो तीसरी स्टेज होती है। तो अगर मैच्योरिटी स्टेज है उसके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की, तो हो सकता है वो जाते जाते भी आपको कुछ सरप्लस कैश देता जाए। दैट हैज टू बी लुक्ड इनटू द मार्केट। नाउ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन ये होता है हमारे मार्केट ग्रोथ पीरियड के कारण। तो अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है स्ट्रॉन्ग मार्केट में, तो हमारा मार्केट ग्रोथ पीरियड बड़ा होना चाहिए। सो द मोर विल बी द मार्केट ग्रोथ पीरियड, the best will be the opportunity to maintain or make our product positions as strong as possible in the market. Now, let us see what is SWOT analysis. SWOT. SWOT analysis. Everybody knows what is the strength, weakness, opportunity, and threat. आप लोगों के भी शॉर्ट एनालिसिस हमने किए, हम लोगों के भी शॉर्ट एनालिसिस हुए, डिपार्टमेंट के भी शॉर्ट एनालिसिस हुआ। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब होता है टू फाइंड किसी चीज का स्ट्रेंथ निकालना, वीकनेस निकालना, अपॉर्चुनिटी निकालना और थ्रेट निकालना। उस चीज की स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कोई वीकनेस है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है, किस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, और ऐसी कौन सी चीज है दैट कुड बी थ्रेट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ product in the market. So many companies used to do this kind of SWOT analysis, and this is again, the one form of current analysis kind of for doing this strategic kind of planning. Now, as I told you, 2-3 साल में strategy का change होना market के according बहुत जरूरी होता है to maintain high potential and high growth, to tap the high potential and high growth in the market, वो tap करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए इस तरह के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल्स की हमको जरूरत होती है। नाउ व्हाट इज द वर्थ ऑफ इट? लेट अस अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ एनालिसिस is, usually often dependent upon objective insight of those management individuals who conduct this kind of SWOT analysis. If a management is able to provide exact, objective, relevant information for the analysis, then it is extremely helpful for top managers to, to bring it out with good SWOT analysis, which helps to clarify the strength, weakness, opportunity, and threats. And it has, uh, you know, it gives a clear picture, which gives a clear idea what to do, what not to do. One thing is rightly said, that winners recognizes their limitations but focus on their strength, है ना। हम जो भी विनर्स होते हैं, जो भी विनर हैं, उन्होंने अपने लिमिटेशंस पे या वीकनेसेस पे काम किया है। some may say it as weakness, some may say it as limitation. Limitation is like, limitation और weakness जो होता है वो हमारे मन का वहम होता है। it is not like somebody is weak. हर बंदे का एक फीचर होता है जो वो समझता है मैं नहीं कर सकता। some may hesitate while talking to a person, some may hesitate on coming on a dais and talk about some topic or talk about himself or herself. So सबका एक लिमिटेशन होता है, मैं वीकनेस को लिमिटेशन कहता हूँ, और उस लिमिटेशन को अगर हम ओवरकम करें तो वी कैन बी द विनर्स, एंड that could be converted to our strength as well. But the focus should be our strength. हम हमारी strength को सबसे आगे लेके चलते हैं और साइड बाय साइड अपनी limitations को, अपनी weaknesses को strength में convert करने की कोशिश करते हैं। losers अपनी strength नहीं पहचान पाते और वो अपनी लिमिटेशंस पे ही फोकस करके रह जाते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग हमको ये सिखाती है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है उसको सबसे आगे हम रखें, और हमें हमेशा वीकनेस को पैरेलली बैक ऑफ दैट स्ट्रेंथ, उस स्ट्रेंथ के पीछे पीछे हम उसको, वीकनेस पे भी हमको काम करना चाहिए, सो दैट हम उसको भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर पाए, ताकि हमारा जो वो खाना है वीकनेस वाला वो खाली हो चुका हो। हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल ग्राउंड पे। हमेशा हम में बहुत सारी वीकनेसेस हैं, बहुत सारी हैं, कुछ हमको दिखती हैं, कुछ हमको दिखती नहीं है, कुछ हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ हम नहीं करते हैं। तो चाहे बाहर से मिले या हम जज करें, हमको हमारी वीकनेस या हमारे प्रोडक्ट की वीकनेस पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। जैसे कहना चाहिए, जब तक सांस है तब तक
वीकनेस पे वर्क करना चाहिए और उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना चाहिए. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल ऑल्सो, for a group also, for an organization also, and for the product also. Now let us go through the following points which gives the importance, and these are highlighted here. Now the just a minute. Now what are the highlights of this? This kind of analysis brings a particular, health of the business, whether the business is healthy or it is sick. Many of you must have heard about sick units. Sick units are those, जैसे ऑक्टेल कंपनी भोपाल में थी, वो अब किस तरह से चल तो रही है, लेकिन फॉर सेक ऑफ रनिंग इट इज रनिंग. तो इस तरह के बिजनेस को हम सिक बिजनेस कहते हैं. तो बिजनेस की हेल्थ के लिए हम एनालिसिस कर सकते हैं. वैसे ही सॉट एनालिसिस किसी बंदे के ब्रेन लेवल को भी बता सकता है कि ये कितना वीकनेसेस अगर ज्यादा है या नेगेटिवनेस ज्यादा है तो दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज सिक. और अगर पॉजिटिव नेचर का है, आगे बढ़ के खुद से काम करना चाह रहा है फटाफट फटाफट, तो दैट पर्सन कैन बी टर्म्ड एज हेल्दी वन. हेल्दी ब्रेन है, हेल्दी माइंड है. So इस तरह के शॉर्ट एनालिसिस होते हैं. Now another thing is to, this gives a clear picture about internal and external factors also. कि हमारे फेलियर के लिए इंटरनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स इसलिए गए हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है कि उसके अंदर के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इंटरनल फैक्टर्स के कारण फेलियर है. लेकिन अगर मार्केट में बहुत सारे चेंजेस नए नए आ रहे हैं and we don't have new technology or we don't have any kind of upgradation, और हमारे बंदे अपग्रेड ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, so these can be the external factors which defines our success or failure. इसी तरह बंदे के अंदर भी होता है कि उसके अंदर ही वो उसका अपना इतना कमजोर है कि जिसके कारण वो फेल हो रहा है या सक्सेस हो रहा है. सक्सेस तो नहीं होगा. और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे बहुत जो एक्सटर्नली हमारे साथ लोग बैठते हो जो टोटली हाईली एजुकेटेड हो और हाईली बहुत ज्यादा हो, हमसे कई गुना अधिक हो, तो देयर कैन बी अनदर एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो व्हिच इंडिकेट्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन इंडिविजुअल. बट फेलियर जैसी चीज कोई नहीं होती, और फेलियर्स जो होते हैं वही स्टेप्स हैं सक्सेस पे पहुंचने के. So if you, but acceptance important है कि this at this point I am getting failed. Every time if I am reaching this point, I am getting failed. I am reaching this point, I am failed. So this needs to be recognized. If you are recognize that point and you are accepting that point, this means you are in the positive track or positive direction towards getting the success. Now, what is SWOT? How SWOT analysis evaluates? SWOT analysis evaluates complete business environment in a detailed manner, which helps you to take the strategic decisions for the future course of action. कि मुझे अगले 6 महीने, अगले 1 साल का मार्केट कैसा है, मुझे कैसा करना चाहिए, ये सारे एनालिसिस करने में मुझे हेल्प करेगा. Okay. Now let us move to the third topic of this, which is called decision making. और decision making भी दो प्रकार की होती है, which is structured and unstructured decision making. Now let us see what is first of all decision making. A decision can be defined as the what we call, what you can say, the course of action which purposefully sometimes taken or chosen from set of alternatives to achieve the managerial objectives, sometimes departmental objectives, sometimes organizational objectives or goals, what we call, or aim sometimes. So this is the basic process which is continuous in nature. Continuous in nature for any organization, any department or any business activity. Now decisions are made to sustain the activities of overall business, what we call, or environment. Okay, now it is, decisions are made at entry level, and these are required to ensure whether organization goals are achieved or not. So these kind of, so we know what are decisions. Decisions
हमारा डिसीजन, हम दिन में, लाइफ में, 6 महीने में, साल में बहुत सारे टारगेट्स रखते हैं और उसके अगेंस्ट डिसीजंस भी लेते हैं, वेदर टू गो और नॉट, दिस इज द डिसीजन। और डेफिनेटली वेदर टू गो और नॉट के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं और उनसे हम पता करते हैं वेदर वी हैव अचीव्ड दैट गोल और नॉट। सो here what we are talking about business. So the decision makeup depends upon many core functional values that organization adopts and implement to ensure, rather I should say, the optimal growth and in terms of, you know, जैसे बोलते हैं ना, ग्रो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं उसमें इंश्योर होना, ऑप्टिमम ग्रोथ लाना, है ना। So this is the basic definition of decision making. Now we can have, as I told you, we can have structured and unstructured decisions also. Now what are structured decisions? Structured decisions are which are जो daily routine में होते हो और जो repetitive हो. So these decisions are structured decisions. और decision maker को easily, you know, we can give you any checklist or procedure for handling the same, and you'll be efficient enough. And what are those unstructured decision? Unstructured decisions माना हर बार नई condition create हो रही है. You cannot prejudge. You cannot prejudge or pre-evaluate the insights of the problem definition. You cannot even sometimes define the problem, what exactly it is. So this kind of decisions are unstructured decisions, and here decision making is quite uncertain. यू हैव टू छानबीन ज्यादा करनी पड़ेगी अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस में, क्योंकि कंडीशंस वैसी नहीं है जैसी हमेशा होती हैं. इट गोज ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंटली. सो दिस वे इट हैपेंस. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 3 टॉपिक्स, एंड if you have any doubt or any problem, I can give you, you may call any question upon it. If you have any question on the previous topics also, you may ask me even now or in next lecture also. Although I have shared you the notes of unit 1 and partial of unit 2 which I have taken till yesterday. So hope you have received the PDF in the WhatsApp group and you'll start studying it. I have covered that much topic which I am going to ask you on 12th, that is परसों 12 तारीख को. So what I am going to ask you, I have covered those topics of unit 2 and I have shared the notes of it also, so that you can easily study and give your exams to the best of your level. And believe me, we are here to give you good marks, but provided with the right procedure. So thank you. I think nobody is having any question right now. You may ask me in the next class also. Happy Shivratri to all of you, and take care of your good health. Best of luck for the unit 2 test on 12th परसों. Okay, I may call it a day. Thank you. Thanks for attending the same.